Good morning children, this is class 4 social studies and today we are going to discuss chapter number 7. Although in the last video I have given half chapter and today I am going to take the second half. Okay, so I am turning over the page. Till here we had discussed in the first video structure of the earth. Now from here I am going to take this one by one. Okay, now first of all we are going to take lithosphere. Although very small work has been given in this book, but I would like to tell you in a very simple way that all what is lithosphere? All types of land mass, high mountains, big or small, even deep valleys, vast plains and plateaus are the part of lithosphere. Okay, you can see from this video, this is the simple definition of the lithosphere. Alright, then functions of the lithosphere: it provides nutrients for land organisms, it is a medium of fixation of plants and the home of microorganisms. ठीक है, इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनिज्म से मतलब है कि जितने भी छोटे बड़े जीवित प्राणी हैं उनको ये भोजन प्राप्त देता है लिथोस्फीयर, और मीडियम ऑफ फिक्सेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि लिथोस्फीयर में फिक्सेशन, प्लांट्स का फिक्सेशन हो सकता है. ठीक है, माने कि वो ऐसी जगह है जिसमें कि प्लांट्स ठहर सकते हैं. ठीक है, फिक्सेशन ऑफ प्लांट्स. देन सेकेंड वन इज हाइड्रोस्फीयर. It is written in the book, the surface of the earth which is covered by oceans and other water bodies is called hydrosphere. It is very small and all water bodies which are found on the earth, the surface of the earth are such as oceans, seas, lakes, rivers are in the category of hydrosphere. Then functions of the hydrosphere: it provides habitat for many aquatic plants and animals. यानी कि बहुत सारे पानी में रहने वाले पौधे और जंतुओं का को ये रहने का स्थान देता है. इट फंक्शंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर: इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर मैनी एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. बहुत सारे पानी के जो जीव जंतु हैं और पौधे हैं उनके रहने के लिए ये स्थान प्रोवाइड करता है. पानी के अंदर वो पनपते हैं, रहते हैं. ठीक है. इट ट्रांसपोर्ट इट्स न्यूट्रिएंट्स, और अपने जो उसके गुण हैं, न्यूट्रिएंट हैं जो कि पौधों के लिए और पानी जंतुओं के लिए होते हैं, उनको वो ट्रांसपोर्ट करता है, यानी पानी इधर से उधर बहा के उनको ले जाता है. ठीक है. इट इज़ ए सोर्स ऑफ रिजर्वर ऑफ वाटर. और पानी जो इसको ए बिग वाटर बॉडी विच इज़ फिक्स्ड एट वन प्लेस इज कॉल्ड रिजर्वर. ठीक है. ओके. इट इज़ द सोर्स एंड रिजर्वर ऑफ वाटर, यानी कि एक जगह पे पानी इकट्ठा करना है. इट मे बी लाइक ए आर्टिफिशियल पॉन्ड वी कैन से, पानी को जहाँ इकट्ठा किया जाए. ठीक है. देन इट इज़ मेड यूजुअली नियर द डैम ऑल्सो, जहाँ पानी इकट्ठा करा जाता है रोकने के लिए, टाइम टाइम पे उसको छोड़ा जाता है. दैट इज़ कॉल्ड दिस. ठीक है. देन बायोस्फीयर. Biosphere is the zone of the life on earth where land, water and air interact with each other. ठीक है. And as I told you in the first video also, that biosphere is that part of earth where land, water and air are in contact with each other. That is the earth, the land on which we live. Okay. This zone supports several varieties of plants and animals. Alright, and our earth is a unique example of it in the whole universe. हमारी पूरी जो संसार है उसमें ये हमारी अर्थ जो है, एक दिस इज़ वन ऑफ द प्लैनेट्स, यू नो ना. सो दिस इज़ a unique example of biosphere. Then we are going to talk about the major landforms. धरती के लैंड के और अन्य प्रकार. Landforms are the natural features and shapes existing on the face of the earth. ये नेचुरल होते हैं, खुद से बने होते हैं, इन्हें कोई बनाता नहीं. इट इज़ नॉट आर्टिफिशियल, इट इज़ ए नेचुरल सोर्स which are found on the face of the earth. We will study it. The following are some of the landforms of the earth.
We go to the next page, for page number 43. First of all, we will talk about the plains. Flat and low lying land surfaces are called plains. मैदानी क्षेत्र जो कि फ्लैट होते हैं और लो लाइंग होते हैं, ऊंचाई पे नहीं होते, नीचे होते हैं. As we have the surface and land in our Prayagraj. Okay, that is the best example. Mostly big cities and towns are found on the plains. Plains are usually thickly populated. That is why they are thickly populated, because life is easy on the plains. Okay, and it is easy to set the railway lines and railway tracks and roads also, because the land is even. Okay, you can see here, this is a grass over it, but it is a flat land. That is called plains, मैदानी क्षेत्र. ठीक है. Then number 2, plateaus. Highlands with flat tops are called plateaus. थोड़े ऊंचे होते हैं लेकिन बहुत पॉइंटेड नहीं होते हैं, जैसे कि माउंटेन पीक होती है. फ्लैट टॉप्स होते हैं उनके, यानी कि दूर तक चपटे फैले हुए थोड़े ऊंचे पहाड़, तो उसको हिंदी में इट इज़ कॉल्ड पठार, प्लेटोज. दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. और इनकी विशेषता ये है कि उनके अंदर जो है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो कि विच आर यूजफुल फॉर मैनी बिग इंडस्ट्रीज. एज फॉर आयरन ओर, वी कैन से आयरन निकाला जाता है, कोल और मैग्नीज़ और माइका, अब्रक जिसको बोलते हैं. ये सब चीज़ें जो हैं वो प्लेटोज़ के अंदर ज़्यादा पाई जाती हैं. द डेक्कन प्लेटो ऑफ इंडिया इज़ वास्ट इन एरिया. In the southern direction of our country, this Deccan Plateau is famous and it is found in a very vast area. बहुत बड़े क्षेत्र में वो फैला हुआ है. ठीक है. The plateau of Tibet is the highest plateau in the world. Plateau of Tibet is the highest plateau in the world. ठीक है. It is also known as the roof of the world. If anybody asks you to what is called the roof of the world, you can say the Tibetan Plateau. Then we come to the third part, deserts. Deserts mean deserts. This is another landform. Deserts are largely sandy or snow covered areas which support life and no vegetation. That support little or no vegetation. Little life or no vegetation. Again I am repeating it, sorry. Deserts are large sandy or snow covered areas which support little or no vegetation. This is the right line. Means डेजर्ट में या तो बहुत ही कम वेजिटेशन होता है, कांटेदार झाड़ी इस तरह की होती हैं, या वेजिटेशन होता ही नहीं, बिकॉज देयर इज ए स्कैसिटी ऑफ वाटर इन द सैंडी एरिया, जो कि रेत है, बिकॉज इट इज़ हॉट. और इफ द लैंड इज कवर्ड विद द सन, नेचुरली देयर विल बी नो वेजिटेशन. ओके, because sunlight and soft soil is necessary. It is an essential part to grow a plant, okay, or vegetation we can say. Deserts are either be hot or cold. या तो वो गर्म होते हैं. hot कौन से होते हैं? where there is a sand. and cold कौन से होते हैं? where there is a snow, it is covered, as we have Antarctica. okay, and the largest hot desert in the world is the Sahara Desert in Africa, and the largest cold desert is the Antarctica. Okay, in India also we have some desert part in the western part, Rajasthan area. Most the border area especially is desert. Okay, now mountains. This is the fourth form of the landform. फोर्थ फॉर्म, चौथा प्रकार है माउंटेन्स. एज यू कैन सी द फोटोग्राफ, द हाइएस्ट लैंडफॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड माउंटेन्स. द अरावली आर द ओल्डेस्ट माउंटेन्स इन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, एंड द हिमालय आर द यंगेस्ट माउंटेन्स. माउंटेन्स स्टैंड एज ए बैरियर अगेंस्ट हॉट एंड कोल्ड विंड्स. This is a very useful, children, as the Himalaya is very useful because it prevents the cold Siberian winds to come to our country. This is like a barrier and it is very useful for our country. Okay, we will go to the next page. That we come to the page number 44. High masses of land are called continents. There are 7 continents on the earth. Europe, Africa, North America, South America, Antarctica and Australia are the 7 continents. Asia is the largest and Australia is the smallest continent in the world. It is very simple. Then oceans. There are some big oceans.
in the world. The huge water bodies on the Earth's surface are called oceans. There are 5 main oceans: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean. Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean. Okay, and Arctic Ocean is the smallest ocean on the Earth. This is the end of the chapter, children, and very little part is. Children, now we go to some exercise as I am doing in every chapter. Fill in the blanks. You can see, and you can copy it in write in the copy after looking, or we can fill up in the book. This is found on page number 45. Every time I will tell you to fill up the blank spaces and matching and everything. Whatever exercise is given, you should fill it up when I am giving you. This will be useful in the examination. Okay, so you can have a look at it, and this part here and this by the following. Okay, these parts I have taken here. 1 2 3 4 5. This is the sequence is D E B C A. Okay, I have written it very clearly. You can have a look and you can write in your books also. This is your homework, I can say. Come to page number 46 now. Identify the following. We have to give the answer in one word. This is very easy. The first one, the answer is atmosphere. Then second, hard outer layer. Then third में lithosphere you will write. Fourth वाले में लिखेंगे आप continent. Fifth में लिखेंगे hydrosphere. Again here, and sixth वाला biosphere. So it is very clearly I have written with the reading. You can copy it from the book. Okay, thank you.